अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं चैट नहीं पढ़ सकता बार बार, so it's better if you people can talk. Okay boys, let us start. So before we started with the coordinate geometry, मैं सिर्फ NBS के थोड़े से subjects का बता दूंगा. You have 3 subjects in your test for NBS, that is maths, basic maths होती है तुम लोगों की. maths इसके 80 MCQs होते हैं. बेसिक मैथ्स का क्या मतलब है कि तुम लोगों का बेसिक अलजेब्रा था व्हिच यू पीपल हैव रेड इन योर 9th एंड 10th क्लास. बेसिकली 9th क्लास का ही होता है. 9th क्लास का अलजेब्रा होता है. देन इट इंक्लूड्स फैक्टराइजेशन वगैरह, जिसको फैक्टर्स वगैरह या एलसीएम एचसीएफ जो तुम लोग करते हो. ज्योमेट्री होती है. अपने माइक प्लीज म्यूट कर दो सब लोग. ज्योमेट्री वगैरह होती है. एंड देन यू आर लेफ्ट विद सेट्स एंड फंक्शंस वगैरह. ये बेसिक मेथड है. जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है ना, जो सबसे ज्यादा है, दैट इज ऑलवेज अलजेब्रा. अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये तीनों सबसे मेजर पोर्शन बनाते हैं तुम लोगों के टेस्ट का. ओके, देन यू हैव इंग्लिश. इसके भी 80 एमसीक्यूज होते हैं. 80 एमसीक्यूज इसके भी होते हैं. और इसमें ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज तक तुम लोग वोकैबुलरी होती है. 40 एमसीक्यूज तक, ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज तक वोकैबुलरी एंड वगैरह सब इंक्लूड करके. एंड 20 तक या फिर 15 तक कंप्रीहेंशन होती है. और तुम लोग का आईक्यू कल तुम लोग को वर्कशॉप में समझ दिया जाएगा कि उसमें क्या होता है. आईक्यू के बाद फोर्स होते हैं. लेट अस स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. You people know what geometry is. Geometry, study of shapes in usual. Say geometry. But if you combine that with the coordinate axis of x and y, x y का अगर coordinate axis ले लो और उसमें geometry use करो. For example, you take points over here and you make a shape from these points. This would be known as coordinate geometry. It could be any shape, but if you are using the coordinate axis for that, then it is known as coordinate geometry. Okay. इसमें जो तुम लोग के कोर्स में included, that is linear functions. It is known as linear function. Linear function के टॉपिक में गए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का एक सिर्फ यूज हो रहा है, linear function.
इसका भी सिर्फ डिफिनेशन यूज होता है। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो बेसिकली ये पूरा का जो टॉपिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर एक लाइन होगा सो इट मस्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो तुम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हाट इज स्लोप एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सो सिंपल से ये है, इज इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, inclination from the horizontal, yeah, with respect to the horizontal. In short, it is the angle. Angle कौन सा वाला? ये वाला। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, इससे जितना भी एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट गिव्स यू द स्लोप। अगर जीरो एंगल बना, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल जीरो बना, इट मींस कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप टोटली जीरो होता है। देयर इज नो इंक्लिनेशन, देयर इज नो एंगल, जीरो एंगल मींस जीरो स्लोप। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप जीरो होता है, उसका स्लोप जीरो होता है। अब इसको थोड़ा सा एंगल दे दो, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में, ये मैंने इसलिए दो ड्रॉ की बिकॉज यू हैव टू कंपेयर इट विद समवन, सो समथिंग, सॉरी। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप तो जीरो है, बट इस येलो वाली का स्लोप होगा कुछ। यू नोटिस कि इसका कोई एंगल बन रहा है विच इज नोन एज अल्फा। अब ये स्लोप कितना है इस लाइन का, वो हम फाइंड करेंगे। देन यू आर लेफ्ट विद this another case which is known as the vertical line, जो कि पूरा का पूरा परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल या विद द एक्स एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज में अगर मेजर करोगे ये वाला 90 डिग्री एंगल बनेगा। दिस इज लेट्स से बीटा इज इक्वल टू, प्लीज म्यूट कर दो, बीटा इज इक्वल टू 90 टू होगा अनडिफाइंड। आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई इज इट अनडिफाइंड एंड नॉट इनफिनिटी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्लोप वाज एवर कैलकुलेटेड। Slope के लिए you people might have heard of the famous thing that you need at least 2 points to form a slope, to form a line. मैं लिख लेता हूँ, for a line, एक लाइन अगर बनाना हो या ग्राफ करना हो, you need at least 2 points. मतलब 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए, दो से ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, दो से ज्यादा पे भी ड्रॉ सकते हैं। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो आई हैड 2 पॉइंट्स और मैंने उनको ज्वाइन किया तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अच्छा, स्लोप किस तरह मालूम करते हैं? स्लोप वाज कैलकुलेटेड लाइक दिस। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एंड देन इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो एंड जॉइन देम लाइक दिस। सही है? सो दिस वुड नोन एज डेल्टा वाई, द चेंज इन वाई, एंड दिस वाज नोन एज डेल्टा एक्स, द चेंज इन एक्स। सो स्लोप का जो फॉर्मूला है दैट इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई टू डेल्टा एक्स, या फिर इसको बोलते हैं राइज ओवर रन। राइज मींस के वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है, वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है। ये लाइन ये वाली थी, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, उसमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है। फिर परपेंडिकुलर का रेशियो विद द बेस का रेशियो जो होता है वो तुम लोग को स्लोप देता है। सो ये स्लोप का इन शॉर्ट फॉर्मूला है। अब डेल्टा वाई क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1, जिस तरह हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, एंड डेल्टा x इज x2 माइनस x1। But again, it is just theory. How would you actually be asked in your MCQs? MCQs में तुम लोगों से इस तरह पूछा जाएगा। They'll ask you कि 1,2 and 2,4 इससे एक लाइन पास हो रही है, इन 2 पॉइंट्स एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन का स्लोप क्या है? What is the m? So you just have to use the formula. M is equal to delta y over delta of x. Delta y means change in y. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y, ये वाले दोनों है, सही है?
x1, y1, x2, y2. So 4 minus 2 divided by 2 minus 1. This would give you 4 minus 2 is 2. 2 divided by 2 minus 1 is 1. So 2 over 1 is 2. So इसका slope तुम लोगों के पास 2 आता है. So that is how you calculate a slope if you are given points. Now, for example, if you are given 3 points, 2, 3, 3, 4, and 5, 6. For example, 3 points given, and जैसे कि इससे एक line pass होती है. Let's assume कि इससे एक line pass होती है. They have given you 3 points. Remember कि slope constant होती है एक line की. For a line, slope is always constant. मतलब मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए. वो लोग अगर तुम लोग को 3 दे या 10 दे, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जब स्लोप कैलकुलेट करोगे वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम ही रहेगा. अगर वो सेम नहीं रहा तो फिर वो बिल्कुल लाइन है ही नहीं. लाइन की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ कांस्टेंट स्लोप. अगर वो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहा, सेम नहीं रहा सब पॉइंट्स के दरमियान, तो इट वुडंट बी अ लाइन इन द फर्स्ट प्लेस. स्लोप ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. Calculated between these two, 4 minus 3 divided by 3 minus 2, or these two, it will always remain the same. For example, 1, 2, 2, 4, and 3, 6. Let's calculate it between these two. पहले हमने किया m is equal to 2 आया था इससे. अब इन दोनों के दरमियान कर लेते हैं m is equal to 6 minus 4 y2 minus y1 divided by 3 minus 2. 6 minus 4 is 2, 3 minus 2 is 1 is equal to 2. Same 2 आ गया. It means कि ये slope constant है. It means कि ये तीनों points same line से pass करें. You can also calculate it between the first and the last one. Okay. Now, ये तो coordinates अगर हमें given हो, अगर for example points given हो, but as I said कि slope has something to do with the angle. So it means कि for example if I ask you कि a line is inclined at 30 degrees with the horizontal. Find slope. अब figuratively you can draw the figure कि how would you draw the figure for it? For example, it would be something like this. यहाँ पे 30 degree का angle बन रहा है, but you are given no else information. कोई और information given, you are not given point. So how would you still find it? Again, it is in the definition of it. When we made this, I mentioned that this is perpendicular and this is base of a right angle triangle. So if you take this as an alpha, so tangent of alpha, you can see tangent of alpha is equal to perpendicular or base होता है. And what do you notice? Perpendicular is delta y or base is delta x. So you get tangent alpha is equal to delta y or delta x. And what is delta y or delta x? It is the same slope. So basically slope का formula है tangent of alpha. तो अगर angle given है ना, simple बात है, उसी angle का tangent ले लो and you will find the slope. So tangent of alpha is equal to tangent of 30, and this would give you 1 by square root of 3. How would you find this value? There is a shortcut. I'll mention it later on. Okay. So now we came to know about the slope. Now there are some other characteristics about some special lines. If there is a line, it will have two special things: slope and equation. Slope and equation. Slope होगा और equation होगा. Now let's talk about the difference between infinity and undefined first before I go with horizontal and vertical lines. These are not the same. Everybody thinks that these are the same. These are not the same. It is only told to you people that these are the same because it's not your level to study beyond this. Undefined and infinity are two different things, two different concepts. How? Infinity is any number. Any number defined किया गया है, any number, it is a relative concept. For example, if somebody comes up to me and he says he has one pen, and I tell him I have 1 billion pen. Taking as an example, I have 1 billion pen. Now 1 billion pen
is a lot more. Yeah, 1 billion pen is infinity compared to one pen. It is like a relative term. Your one pen will be negligible compared to 1 billion. So that is why in maths they say that if you have a number that is large, infinity will still be larger than it, far more larger than it. Infinity will still be larger. So it is a concept made, infinity will still be larger. So it is a relative concept that nothing is more greater than infinity. Undefined. Undefined in short हम कहते हैं कि zero से divide नहीं कर सकते, but why? Zero से divide नहीं कर सकते. What is the reason? Practically इसकी reason क्या है? If I tell you कि 4 divided by 2, it means कि 2 के साथ में क्या multiply करोगे 4 आ जाए. So we know कि 2 multiply करोगे. When you multiply these two, you get the same 4. But if I tell you कि 3 divided by 0, it means कि 0 के साथ में क्या multiply करोगे 3 आ जाए. अब 0 के साथ जो भी multiply करोगे 0 आएगा, तो 3 किस तरह आएगा? So it is not possible. That is why we say कि it is undefined. But in practical situations, it will show you an impossibility of a situation. Simple सी मिसाल ले लेते हैं. You people know what is speed का formula. Speed is equal to distance over time. अब for example एक बंदा कह रहा है कि there is an object who has covered 10 meter distance in 0 seconds. अब तुम लोग खुद सोचो, is it possible कि if the time has not passed, अगर time pass ही नहीं किया, तो will there be any distance covered? No, it's not possible. भाई जब time pass ही नहीं हुआ, तो how will there be distance covered? So that is why we call it undefined. Now I'm going to write points and then मैं उसके equations और वो बताऊंगा. Okay. 1, 2, 2, 2, 2, 2, and let's say 5, 2. And third वाला ले लेते हैं, let's say 3, 1, 4, 1. इसका if you find slope by the formula, so y2 minus y1, which means 2 minus 2 divided by 2 minus 1, it gives you 0. Same you do it for this one, you get 2 minus 2 divided by 5 minus 2. 2 minus 2 divided by 5 minus 2, you get 0. And same goes for this one, you get a slope of 0. Why did you get a slope of 0? If you notice all these 3 points, इनमें सब में y coordinate same है. हर दो में y coordinate same है. इन दोनों में 2 है y coordinate, इन दोनों में भी 2 है y coordinate, इन दोनों में 1 1 y coordinate है. So if there are points, for example मैं 3 points लिख देता हूँ, 1, 3 and 3, 3. Then I write 2, 2 and let's say 5, 2 जो मैंने ऊपर लिखा था, and 1, 1 and let's say 2, 1. इन तीनों के y coordinates, इसके y coordinates अगर देखो इन दो पॉइंट्स के वो सेम है, 3 and 3 है. इनके अगर y coordinates देखो 2 and 2 है, इनके y coordinates देखो 1 and 1 है. So when y coordinate इसको याद कर लो, the next one will be the complete opposite of this. Y coordinate same, it means तीन बातें होगी. स्लोप 0, ये पहली बात. स्लोप 0 किस तरह 0 मैंने बताया कि y2 minus y1 के ऊपर न्यूमरेटर ही 0 हो जाता है. स्लोप 0. इक्वेशन इसकी होगी y is equal to that same coordinate जो रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to 3, क्योंकि इसमें y हमेशा 3 होगा. ये तो दो पॉइंट्स गिवन, अगर 1 लाख भी गिवन हो सब में y 3 होना चाहिए. इसका होगा y is equal to 2, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट 2 है. y is equal to 2 इसकी इक्वेशन होगी. इसकी इक्वेशन होगी y is equal to 1. स्लोप सबका 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इक्वेशन इस तरह चेंज होगी कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वही उसका इक्वेशन होगा. And last, which is already known, it will be a horizontal line. तीन बातें, जैसे ही पॉइंट्स तुम लोगों को गिवन हो, जो भी पॉइंट्स गिवन हो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पे ही ट्राई कर लेते हैं.
minus 1 comma 4 and 2 comma 4 and let's say 3 comma 4. मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल they asked me about slope and the nature of the line के line किस तरह है. So मैंने पॉइंट्स को देखा, I saw कि oh wait y कोऑर्डिनेट सब में सेम है, बस this is enough to tell me कि स्लोप 0 होगा, लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, स्लोप 0, लाइन हॉरिजॉन्टल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी, y is equal to that same coordinate, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही सेम है तो y is equal to 4 इसकी इक्वेशन हो गई. That's it. अब कन्वर्सली एक होता है y कोऑर्डिनेट, एक होता है x कोऑर्डिनेट. सो व्हाट इफ आई एम गिवन सेम x कोऑर्डिनेट, इन तीन पॉइंट्स को उल्टा कर देना है. हाउ वुड यू रिमेंबर? तुम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन याद करनी है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हुई तो वेल एंड गुड, हॉरिजॉन्टल लाइन ना हुई तो उल्टा कर दो, वर्टिकल हो जाएगी. हाउ? लाइक दिस. लेट्स से गिवन 1,3 1,4 एंड 1,5. मैंने चेक किया कि यार हॉरिजॉन्ट क्या कहते हैं इसके y कोऑर्डिनेट तो सेम नहीं है, बट आई नोटिस के x कोऑर्डिनेट सेम है. तो x कोऑर्डिनेट सेम है, इट मींस हॉरिजॉन्टल का उल्टा क्या होता है, वर्टिकल लाइन. तो पहली बात तो ये है कि ये वर्टिकल लाइन हो गई, वर्टिकल. सही है. दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, हॉरिजॉन्टल का स्लोप 0 होता है, इसका होगा इसका उल्टा, तो m इज इक्वल टू 1/0 होगा. 1/0 किसे कहते हैं, अनडिफाइंड. इसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा. एंड उसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू दैट रिपीटिंग वैल्यू, y इज इक्वल टू कांस्टेंट या y इज इक्वल टू दैट रिपीटिंग कोऑर्डिनेट. इसका होगा x इज इक्वल टू दैट रिपीटिंग कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें सब में x सेम है. सो x इज इक्वल टू 1. दैट इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट. जो भी पॉइंट गिवन यू हैव टू यूज जस्ट दिस. लेट अस टेक 3 एग्जांपल्स. For example, if I am given, let's say 1,3 and 2,3, 4,2 and 4,3, and the last one is 3,2, 3,2 and let's say 4,6. अच्छा, I came to the first 2 points. I noticed कि भाई y coordinate same है, सीधे सी बात है कि m is equal to 0, slope 0, horizontal line, and y is equal to same coordinate, इसका slope हो जाएगा. y is equal to, sorry, 3 है यहाँ पे, y is equal to 3. दूसरे पे आ गया, इसके y कोऑर्डिनेट तो सेम नहीं है, इट मींस का हॉरिजॉन्टल नहीं है. हॉरिजॉन्टल नहीं है, मैंने x कोऑर्डिनेट से किया, यस दीस आर सेम. उल्टा कर लो सबको. m इज इक्वल टू 0 का उल्टा है m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0. दिस बिकम्स अनडिफाइंड. सही है. हॉरिजॉन्टल का उल्टा है वर्टिकल. वैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उल्टे नहीं होते, इन सेंस ऑफ द स्लोप वगैरह की बात कर रहा हूं, तब उल्टे होते हैं. ओके. एंड क्या कहते हैं इसका जो इक्वेशन होगा, दैट वुड बी x इज इक्वल टू रिपीटिंग कोऑर्डिनेट व्हिच इज x इज इक्वल टू 4. थर्ड पे आ गए. नाउ इन थर्ड यू नोटिस के ना तो इसके y कोऑर्डिनेट सेम है ना x कोऑर्डिनेट सेम है, तो कोई मसला नहीं है. m इज इक्वल टू डेल्टा y और डेल्टा x फॉर्मूला लगा दो, स्लोप आ जाएगा. 6 minus 2 divided by 4 minus 3, you get 6 minus 2 is 4, 4 divided by 1 which is 4. So slope इसका 4 आ गया. Now question arises के what would be the equation of this line? What would be the equation of this line? So that is the question. इन दो का तो तुम लोगों ने मालूम कर लिया. This is easy, but compared to this, what would be the equation of this line? How would you calculate the equation of these two, of the line that is passing between these 2 points? How would you calculate that? Okay. So then we come to the point of equation of line. How would you calculate the equation of a line? Equation of a line किस तरह calculate करते हैं? So there are two things. Two points given, two or more points given. या तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स गिवन होंगे. दूसरा पॉइंट है वन पॉइंट एंड स्लोप गिवन. इन दोनों में से कोई भी अगर गिवन हो ना, तो देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इफ यू नोटिस कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप तो वैसे भी गिवन होता है. अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो या फिर दो से ज्यादा, तो स्लोप तो वैसे ही मालूम हो जाता है ना, फॉर्मूला लगा के. एंड वो फिर ये सेकंड केस ही बन गया. तो अगर पहला केस गिवन हो, फिर तुम लोग के पास ये सेकंड केस ऑटोमेटिकली बन जाता है, बिकॉज पहले में अगर पॉइंट गिवन है तो उसकी स्लोप भी मालूम कर लो. बट हाउ वुड यू कैलकुलेट इट? You require a formula for that. The formula is y
The formula is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, you get y2 minus y1 is equal to m into x2 minus x1. So if there is a point given x1 comma y1, ये जो मैंने ब्लू से टिक किया है, x1 comma y1 का कोई पॉइंट गिवन हो एंड m स्लोप गिवन हो, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. और तुम लोगों ने सिर्फ ये करना है कि y2 और ये x2 इनको बस रिप्लेस करके y और x लिख देना है. देयर इज नो नीड टू राइट इट y2 और x2, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया. सो द फॉर्मूला दैट इज फाइनलाइज्ड वुड बी y2, sorry, yes, the final formula would be y minus y1 is equal to slope into x2 minus x1. So let's do an MCQ. If I tell you कि 1,2 and 2,4 से एक लाइन पास कर रही है, उसका इक्वेशन मालूम करो. So this is the first case. You are given 2 points. अब 2 points given है, that means you can find the slope. Achha, by the way, there is a direct formula as well to find the slope if to find the equation if points are given, but you people don't have to learn that. Okay, 2 points given है, मैंने सीधा slope मालूम किया. m is equal to 4 minus 2 divided by 2 minus 1. 2 divided by 1 is equal to 2. स्लोप आ गया 2. अब मुझे एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए. सही है, क्योंकि फॉर्मूला मुझे बताता है कि यू नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप. ये फॉर्मूला बताता है m स्लोप है, x1 y1 पॉइंट है. सो स्लोप मेरे पास आ गया, दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर लो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो y माइनस y1, मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो x1 y1 इसके यूज करूंगा, तो इसका y1 क्या है 2 इज इक्वल टू स्लोप विच इज 2 into x minus x1, ये वाला x1 यूज करूंगा तो which is 1. Now you just simplify it. Y minus 2 is equal to 2x minus 2. These two cancels and you get y is equal to 2x. So y is equal to 2x is the equation. How would I even find out that y is equal to 2x is the equation? So there is a back solving technique as well. For example, in the paper, तुम लोगों को points given है, but somehow you just forgot the formula. For example, you just forget the formula. It can happen. So then you have to do this. Points given है 1,2, 2,4. नीचे 4 options given हो गए. For example, let's say y is equal to 2x, ये एक option given होगा. Y is equal to 3x, तो ये दूसरा option given होगा. अब अगर points given है 1,2 and 2,4, it means कि ये दोनों points अपनी equation को तो satisfy करेंगे. चारों में से तो एक आंसर होगा, तो मैं सिर्फ पुट कर लूंगा ऑप्शंस में 1 by 1 कि कौन सा सेटिस्फाई करता है. 1,2 इसमें पुट करो, इज इट सेटिस्फाइंग? y की जगह 2 पुट करो, x की जगह 1, 2 into 1, 2 is equal to 2 सेटिस्फाई हो रहा है. देन पुट द सेकंड वन, y की जगह पुट करो 4, 4 is equal to x की जगह पुट करो 2, 2 into 2, 4 is equal to 4. ये भी सेटिस्फाई करे, तो जब पॉइंट ही सेटिस्फाई करे, इट मींस कि ये वही लाइन है जिस पे ये दो पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं. अगर लाई ना करते तो ये सेटिस्फाई ही ना करेगा. If you try it with 3, y is equal to 3x, as you put x is equal to 1, y will be 3, not 2. So it is not satisfying it. Let's do another one. For example, if I tell you okay, slope is 1 and point is 3,4, find the equation. Find equation. So y minus y1 is equal to slope into x minus x1. X minus x1. Put the values. Y minus y1 क्या है 4 is equal to slope क्या है 1 into x minus x1 क्या है 3. Now you just simplify this equation. Y minus 4 is equal to x minus 3. You shift this over here, so y is equal to x minus 3 plus 4. This gives you y is equal to x plus 1. Again, forgot the formula. You people know कि अगर तुम लोग ये point इसमें put करोगे तो ये satisfy करेगा. This will satisfy. अच्छा. What if
I am going to find it for, let's say, vertical line 1 comma 1 and let's say 1 comma 3. अगर कोई मुझे कहे कि इसका इक्वेशन फाइंड करो बट यूज दिस मेथड, दिस प्रॉपर फार्मूला, हाउ वुड आई फाइंड इट? इसको तो मैं डायरेक्टली, मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, बिकॉज वी नो हाउ इट वर्क्स, जो अभी मैंने पहले करा है. बट हाउ वुड वी यूज दिस फार्मूला? वी वुड यूज इट लाइक दिस. स्लोप का लिखो फार्मूला, m इज इक्वल टू 3 minus 1 by 1 minus 1 which is 0. इसको इस तरह लिख लो. You will get 2 divided by 0. Slope को ले लो 2 divided by 0. Now y minus y1 is equal to m into x minus x1 का फॉर्मूला है. Values put करो but do it like this. y minus y1, y minus y1 which is 1 is equal to, मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ. y minus y1 is equal to स्लोप की जगह तुम लोगों ने लिखना है 2 over 0. 2 divided by 0 into x minus how much is it? It would be x minus x1, so it would be 1. You will cross multiply the 0. 0 is equal to 2 into x minus 1. You can divide by 2. You will get x minus 1 equals 0, which will give you x is equal to 1. X is equal to 1 की equation आ गई, and you know x is equal to 1 हमें पहले से भी पता था because इसमें coordinate repeat हो रहा है. But this was just by the equational method. If you are using the formula, how would you find it? I'm just gonna tell you one more type of equation of line, then we'll complete the rest by tomorrow, inshallah. So the last one is the slope intercept form. You people might have seen it, y is equal to mx plus c. I'm not going to get into the detail of it because we don't have that much time for today, but yeah, मैं कल explain कर लूंगा. I'll just give you an overview of it. Y is equal to mx plus c. In short, इसको किस तरह याद रखना है? Y एक साइड पे होगा, बाकी सब कुछ दूसरे साइड पे होगा. Y will be on one side, बाकी सब कुछ दूसरे साइड पे होगा. For example, y is equal to 2x, y is equal to 3x, y is equal to 1 by 3x, प्लस 2 कर लो, यहाँ पे -1 as you wish. But सिंपल सी बात है कि y एक साइड पे और बाकी सब सामान दूसरे साइड पे. y is equal to 3x minus 6 and so on. So this is known as slope intercept form. In this you notice कि जो x के साथ कोफिशिएंट होता है ये m, this m is your slope. m यहाँ पे 2 है, so slope इसका 2 है, इसका 2 स्लोप है, और इसका c 0 है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x plus 0. तो कंपेयर कर लो, हमेशा y is equal to mx plus c के साथ कंपेयर करो. m is equal to 2, c is equal to 0. If you notice this one, इसका जो m आ रहा है that is 1 by 3, स्लोप इसका 1 by 3 और c इसका 2 है. Same goes for the others. कंपेयर कर लेते हैं for few questions. y is equal to 2x minus 3. कंपेयर करो, y is equal to mx plus c के साथ mx plus c के साथ कंपेयर करो. So m 2 आ रहा है, c minus 3 आ रहा है. c is equal to -3, m is equal to 2, so m is equal to 2 slope हो गया. Okay. Y is equal to 1 by 3 x minus 2. So y is equal to mx plus c के साथ कंपेयर करो, mx plus c. m हो गया 1 by 3, so slope हो गया 1 by 3, and this would become c is equal to -2. So इसका y intercept -2 हो गया. I'll explain this y intercept concept tomorrow. Okay. How about this one? Y is equal to 2. It means कि y is equal to mx plus c के साथ अगर कंपेयर करोगे mx plus c, तो इट मीन्स कि m is 0 है, क्योंकि जब ये m 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा. इट मीन्स कि m मतलब स्लोप 0 है, और ये हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, which we studied in the beginning. So how would you be asked a question based on this? Quite simple. Y is equal to x plus 2. X plus 2 is inclined at what angle? At what angle? This line would be inclined at what angle? This will be asked of you. So y is equal to x plus 2. You can write it as y is equal to x plus 2
then you can write it as y is equal to 1 into x plus 2. क्यों मैंने इस तरह लिखा, you'll know now. Y is equal to mx plus c. c2 आ रहा है, m1 आ रहा है. So since I found slope to be 1, क्योंकि x का coefficient 1 है, since slope is 1, so it means slope का दूसरा formula क्या था, m is equal to tangent of alpha या tangent of theta. So it means कि tangent of theta या tangent of alpha is equal to 1. And from the trigonometry shortcut we know कि this means कि वो कौन सा एंगल है अल्फा जिसमें टेंजेंट तुम लोग को 1 आंसर देगा. सो आई कैन से कि टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री मुझे 1 देते हैं. सो इट मींस कि अल्फा 45 डिग्री है. अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री. इट मींस कि ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पे बनी होगी. आई विल रिपीट इट. यू विल बी गिवन अ लाइन. लाइन का तुम लोगों ने